हेलो दोस्तों। आप लोगों को अभी मैंने बहुत बातों को मुझे नहीं उलझाना है। मुद्दे पे बात करते हैं, एकदम सही बात करते हैं। ठीक है, हमें डाटाबेस मैनेजमेंट सीखना है, लेकिन हमको कोई पढ़ाता नहीं है ठीक तरीके से। मुझको भी कोई नहीं पढ़ाता था, लेकिन दोस्तों मुझे बस अभी मुझे मेरे किसी सीनियर ने बहुत हेल्प करी। उनका किसी अच्छी कंपनी में सिलेक्शन हो गया। उन्होंने मुझे डाटाबेस सिस्टम के नोट्स शेयर कर दिए, लेकिन मुझे ये पढ़ने में बड़े अच्छे लगे। इसलिए आपके साथ ईमानदारी से आपके साथ में ये पढ़ाई करूँगा। मेरी भी मैंने तो पढ़ ली है, आपको मुझे भी मेरी बात हो जाएगा, आपको भी मैं पढ़ा दूँगा। इसलिए साथ में पढ़ते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कंटेंट्स में, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। डाटाबेस सिस्टम पढ़ेंगे, हम डाटा पढ़ेंगे, हार्डवेयर पढ़ेंगे, सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे। फिर यूजर्स, डाटाबेस आर्किटेक्चर, एक्सटर्नल व्यू, कॉन्सेप्चुअल व्यू, इंटरनल व्यू, मैपिंग्स, DBMS, database administrator, DBA tools, facilities and limitation, data independence, data redundancy and data integrity। पहला चैप्टर हमारा ऐसे खत्म हो जाएगा। फिर यूनिट 2 पे आते हैं SQL में, database models, relation database, relation data structure, domain and integrity constraints, menu example, external versus logical, columns और attributes, rows और tuples, प्राइमरी कीज। जिसको कभी समझ में नहीं आता प्राइमरी की क्या होती है, वो समझ ही नहीं पाता को प्रॉब्लम को देख के कि प्राइमरी की कैसे आइडेंटिफाई करनी है। एम्प्लॉय टेबल कॉलम, जॉब हिस्ट्री टेबल कॉलम, फॉरेन कीज, SQL बेसिक्स, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, क्रिएट टेबल जॉब हिस्ट्री, हाउ टू क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, हाउ टू क्रिएट टेबल जॉब हिस्ट्री, SQL सेलेक्ट क्या होता है, कैसे SQL सेलेक्ट करते हैं, कंपैरिजन सेलेक्ट विद बिटवीन, पैटर्न मैचिंग, ऑर्डर एंड डिस्टिंक्ट। ऐसे करके हमारा यूनिट 1.2 खत्म हो जाएगा। फिर यूनिट 1.3 पे आता है। ये बोर्ड नहीं हुआ हुआ, आपको थोड़ा समझने में दिक्कत हो रही होगी, लेकिन आप प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए। अभी इसमें लॉजिकल ऑपरेटर आ गया यूनिट 1.3 में। और फिर इन आ गया अदर सेलेक्ट कैपेबिलिटीज आ गया, सिंपल काउंट एग्जांपल आ गया, एंड ग्रुप काउंट आ गया, जॉइनिंग टेबल आ गया, सेलेक्ट ऑर्डर ऑफ इवैल्यूएशन, वन टू मैनी रिलेशनशिप, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, एलियासिस विद सेल्फ जॉइंस। ऐसे करके यूनिट 1.3 खत्म हो जाएगा। फिर यूनिट 1.4 आएगा, सब क्वेरीज, जो बहुत ही आसान नहीं है। दिखने में बहुत आसान लिखता है, लेकिन होता नहीं है। सब क्वेरीज समझने में बहुत लोगों को बहुत टाइम लगता है। सॉरी, सब क्वेरीज एनी ऑल, सब क्वेरीज इन और नॉट इन, सब क्वेरीज विद एग्जिस्ट, सब यूनियन ऑफ सब क्वेरीज, व्यूज मैनिपुलेशन, व्यू अपडेट, इंसर्ट एंड डेट, अदर एसक्यूएल स्टेटमेंट, इंसर्ट डिलीट अपडेट एंड। ऐसा कर कर हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो हम फर्स्ट चैप्टर की शुरुआत करते हैं, क्योंकि ये बहुत लंबा है, मैं किसको पढ़ पढ़ के सुनाऊंगा तो दिक्कत होगी। ऐसा करके हमारा टाइम भी वेस्ट हो जाएगा। तो हम फर्स्ट चैप्टर की शुरुआत करते हैं। 1 second। ओके, नाउ इंट्रोडक्शन। Relation database system have become increasingly popular since in late 1970s. They offer a powerful method for storing data in application-independent manner. This means for many enterprises, the database is at the core of the IT strategy. Developments can progress around a relatively stable database structure which is secure, reliable, efficient, and transparent. ओके, तो रिलेशनल डेटाबेस का हमारा ये इम्पोर्टेंस होगी कि क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ कहाँ पे इसकी डेवलपमेंट कैसे प्रोग्रेस हो रही है, रिलायबल है, एफिशिएंट है, ट्रांसपेरेंट है, सिक्योर है। ये बातें हमें याद रखनी है। ओके, अब हम आते हैं अर्ली सिस्टम विद sort of application programs had its own independent master file. The application of data over master files could lead to inconsistent data. Data structuring technique developed to exploit random access storage devices increase the complexity of the insert, delete, update operations on data. As a first step toward DBMS, packages of subroutines were introduced to reduce programmer effort in maintaining these data structures. However, the use of these packages still requires knowledge of the physical organization of the data. Okay, data structure की technique
एक्सप्लॉइट करती है रैंडम मैसेज स्टोरेज डिवाइस को, और कॉम्प्लेक्सिटी इंसर्ट डाटा और अपडेट की को बढ़ाती है। एज अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड डीबीएमएस, ये हमारा पहला स्टेप है डीबीएमएस की तरफ। पैकेजेस ऑफ सब रूटीन वर इंट्रोड्यूस टू प्रोग्रामर एफर्ट इन मेंटेनिंग दिस डाटा स्ट्रक्चर। इन डाटा को मेंटेन करने में रिड्यूस करता है हमारा डाटा स्ट्रक्चर, इसको मेंटेन करने में हमारा सब रूटीन हमारे प्रोग्रामर का एफर्ट को जो है कम करता है। डाटाबेस सिस्टम आ गया हमारा। डाटाबेस सिस्टम इज अ कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम to record and maintain information. A database system is a computer-based system to record and maintain information. The information concerned by anything of significance to the organization for which use of it is intended. A database system involves four major components: data, hardware, software, and users. ये बात चार बातें ध्यान रखने की है इसमें: डाटा, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड यूजर। ये चार चीज़ें पे डिपेंड होता है सारा डाटाबेस सिस्टम। डाटा, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, यूजर। डाटा, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, यूजर। फिर डाटा पे आते हैं। डाटाबेस इज अ रिपोजिटरी फॉर डाटा which in general both integrated and shared. Integration means that the database may be thought of unification of several otherwise distinct files with any redundancy among those files partially or wholly enumerated. The sharing of a database refers to the sharing of data by different users, in the sense that each of those users may have access to the same piece of data and may use it for different purposes. मतलब पहले हम उसे यूज भी कर सकते हैं। डिस्टिंक्ट फाइल रिडंडेंसी and the sharing of database refers to sharing of data by different users, in the sense each of those users may have access to the same piece of data. हम अपने डाटा को शेयर भी कर सकते हैं और वही डाटा को दूसरा भी हमारा डाटा यूज़ कर सकता है। उस डाटा बेस वो हमारा स्टोर हो जाता है अलग जगह पे, और फिर हमारे लिए भी यूज़फुल रहता है और दूसरे के लिए भी हमको हेल्पफुल हो सकता है। अब आता है डाटाबेस को समझते हैं। यूज़र पे डिपेंड करता है डाटा। सारा तीन यूज़र हो गए, यूज़र पे डिपेंड करेगा डाटाबेस। अब डाटाबेस पे हमारा तीन यूज़र हैं। अब इस तीन यूज़र से हमारा डाटाबेस पूरा कनेक्टेड है। हार्डवेयर में ये है सारा हार्डवेयर। The hardware involved consists of secondary storage devices which on which the data resides, together with the processor, control units, and channels, so forth. The database is assumed to be too large to be held in entirely in the computer primary storage. Therefore, there is a need for software to manage that data. हम सारे डाटा को मैनेज कौन करेगा? हार्डवेयर करेगा। सॉफ्टवेयर है हमारा DBMS, the software that allows one or many persons to use or modify the data stored in these database systems. A DBMS allows the user to deal with the data in abstract terms. Logical data structure user. There are three broad classes of user. The application programmer responsible for writing programs in some high-level languages such as COBOL, C++. इस लाइन का मतलब समझ में आ गया होगा क्या है। एप्लीकेशन प्रोग्रामर है जो राइटिंग हमारी होती है लैंग्वेज की, जैसे कोई हमारा कोबोल में लिखता है, ओके, C++ में लिखता है। फिर दूसरा लाइन का मतलब है द एंड यूजर हु एक्सेस द डाटा विया इन अ क्वेरी लैंग्वेज। अब इसमें हमें याद रखना है कि एंड यूजर वो होता है जो क्वेरी लैंग्वेज, जो हमारी स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज होगी, वो भी डाटाबेस से ही तो बात करेगी। मतलब क्वेरी लैंग्वेज में हम जो लिखेंगे डाटाबेस वो समझेगा। database administrator who control all the operations on the database. database administrator का मतलब यही होता है जो सारे database को कंट्रोल करता है। अब database आर्किटेक्चर पे आते हैं। DBMS do not all conform to the same structure. The three level of the architecture forms the basis of modern database architecture. This is in the agreement with the NC Spark study group on the database management system. NC Spark is the American National Standard Institute Standard Planning and Requirement Committee. ये याद रखने वाली चीजें हैं, देख लिया ना। NC Spark is the American National Standard
इज टू डिसेंडर प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट कमेटी। ये याद रखना भाई, ये याद रखने वाले हैं दोस्तों, आपको याद रखना है डाटाबेस आर्किटेक्चर क्या होता है। हम डो नॉट कंफर्म, अब ये बातें आपको याद रखने की है, ये नेट पे डायरेक्ट नहीं दिखता है। हमें विकिपीडिया खोलोगे फिर आप पढ़ोगे, निकलने में बहुत टाइम लग जाएगा, फिर लिखोगे। इसलिए अच्छा है यहीं पे पढ़ लीजिए, आपको एक साथ मिल जाएगा सब कुछ। The architecture of DBMS is divided into three general levels: external, conceptual and internal. एक्सटर्नल में हमारे ये आगे इंडिविजुअल यूजर व्यू, कॉन्सेप्चुअल में आगे कम्युनिटी यूजर व्यू, इंटरनल में आगे स्टोरेज व्यू। एक्सटर्नल में कंसर्न विद द वे इंडिविजुअल यूजर टू सी द डाटा, हमारा डाटा कोई एक्सटर्नली देख सकता है। एंड कंसेप्चुअल लेवल में कैन बी रिगार्डेड एज अ कम्युनिटी यूजर व्यू, अ फॉर्मल डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा टू ऑफ इंटरेस्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन इंडिपेंडेंट ऑफ एनी स्टोरेज कंसिडरेशन। इंटरनल लेवल में हमारा कंसर्न द वे इन विच द डाटा इज एक्चुअली स्टोर्ड। ओके, हमारा एक्सटर्नल, कंसेप्चुअल, इंटरनल, ये तीन हमारा लेवल है डाटाबेस आर्किटेक्चर के। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं एक्सटर्नल व्यू पे। एक्सटर्नल व्यू को समझते हैं हम ध्यान से। हमें समझना है हमें सबसे पहले कि हमारा एक्सटर्नल व्यू होता क्या है। हम इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, यदि हो जाए तो। चलो कोई बात नहीं, छोड़िए। देखिए दोस्तों, आपको पहले समझना पड़ेगा एक्सटर्नल व्यू होता क्या है। एक्सटर्नल व्यू हमने पहले डिस्कस कर लिया। एक्सटर्नल व्यू क्या होता है? कंसर्न विद द व्यू ऑफ द इंडिविजुअल टू चूज द डाटा। ठीक है, अब हम आते हैं एक्सटर्नल व्यू, हमने देख लिया डीबीएमएस से कनेक्टेड होता है सारा। अब इसमें एक्सटर्नल व्यू तीन प्रकार के होते हैं, तीन टाइप के होते हैं। हमने तीन टाइप के सारे एक्सटर्नल व्यू डाटा मॉडल से कनेक्ट कर दिए। फिर स्टोर डाटा जो हमारा इंटरनल व्यू है उससे कनेक्ट हो गया सारा डाटा कॉन्सेप्चुअल व्यू, क्योंकि वो हमारा जो डाटा है वो स्टोर तो है ही, और जो डाटा डाटा मॉडल है वो कॉन्सेप्चुअल व्यू है। सारा डाटा बेस सारा इससे कनेक्टेड है। ठीक है नहीं, डाटाबेस हमारा जो कनेक्टेड है वो एक्सटर्नल से भी हो गया कनेक्ट, डाटा मॉडल हमारा कॉन्सेप्चुअल से भी कनेक्ट हो गया, और स्टोर डाटाबेस जो हमारा इंटरनल व्यू है उससे भी कनेक्ट हो गया। तो हमारा इस सारा का सारा जो भी हमारा प्रोसेस है डीबीएमएस का वो इससे ऐसे ही चलता है। फिर एक्सटर्नल व्यू पे आते हैं हम। A user is anyone who needs to access the some portion of data. Okay, they may range from application programmer to casual user with ad hoc queries. Each user has a language at his or her disposal. The application programmer may use a high-level language COBOL, while the casual programmer will probably a query language. Regardless of the language used, it will include a data sublanguage (DSL), which is that subset of the language which is concerned with the storage and retrieval of the information in the database, may or may not apparent to the user. The DSL is a combination of two languages, that is DDL and DML. ये कोई नहीं बताएगा, ये गारंटी रख लो, मेरी लिख के रख लो, कोई नहीं बताने का ये बात। तुम किताब छान लेना, तुम्हें डायरेक्ट कोई नहीं बताने का कि ये DSL के पार्ट है, DDL और DML। ये एकदम से तुम्हारे समझ में लिखे हुए भी नहीं आने के, एक बार समझ लेना। DSL इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू लैंग्वेजेस, जैसे DDL और DML। आपकी कमांड भी सारी इस पे चलेगी, DDL कमांड चलेगी, DML कमांड चलेगी। और क्वेश्चन हमारे को पूछ लेगा कई बार कि DSL लिख दो आप कमांड। अब DSL में हम समझ ही नहीं पाने कि DSL ही नहीं पता किसी को क्या होता है। तो DSL का मतलब ये है भाई, डाटा सब लैंग्वेज। डाटा सब लैंग्वेज के पार्ट है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज और डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, दैट इज DDL और DML। Support the manipulation of processing of data objects, database objects. Each user sees the data in terms of external view, defined by an external schema, consists basically of description each of the various types of external record in the external view, and also the definition of the mapping between the external schema and that underlying conceptual schema. Conceptual view क्या होता है? An abstract representation of the entire information of the content of the database. It is a journal of view of the data. It is actually that is it is a model of the real world. It consists of multiple occurrences
for multiple types of conceptual report defined in the conceptual schema. हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा दोस्तों कि हमारा जो एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंटायर इंफॉर्मेशन है वो हमारा डाटाबेस से आता है। अब दूसरा पॉइंट ये है हमारा कि जो हमारा डाटा का व्यू है वो हमारा रियल वर्ल्ड से कनेक्टेड होता है। इट इज़ द मॉडल ऑफ द रियल वर्ल्ड। कॉन्सेप्चुअल व्यू हमारा बनता है ना, वो क्रिएट कैसे होगा, हमारे रियल वर्ल्ड से कनेक्टेड होता है। ओके, इट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल occurrences और मल्टीपल टाइप्स ऑफ conceptual report defined in the conceptual schema। ओके, इस लाइन का मतलब ये है कि हमारा ये डाटा मल्टीपल टाइप्स ऑफ conceptual report रखता है डिफाइंड इन द conceptual schema। To achieve data independence, definition of conceptual report must involve information content only। दैट इज स्टोरेज इसमें इग्नोर होती है, एक्सेस स्ट्रेटजी इसमें इग्नोर होती है। दैट इज स्टोरेज स्ट्रक्चर इसमें इग्नोर होता है और एक्सेस स्ट्रेटजी इसमें इग्नोर होती है। एक्सेस स्ट्रेटजी इसमें इग्नोर होती है। द कंसेप्चुअल स्कीमा एज वेल एज डेफिनेशन कंटेन्स ऑथराइजेशन एंड वैलिडेशन प्रोसीजर। इंटरनल व्यू आ गया। अब हमारा इंटरनल व्यू में हमने बताया था क्या होता है, इसमें डाटा स्टोर होता है, हमारा डाटा स्टोर होता है। View lower table representation of the entire database consisting of multiple references of multiple types of internal command stores records. It is, however, at one remove from the physical level since does not deal in terms of physical records of blocks nor with the any device specific constructions such as render or track sizes. Details of mapping to physical storage is highly implementation specific and now not expressed in the three-level architecture. The internal view described by internal schema defines the various type of record, store record, what indicates exist, how store fields are represented, what physical sequence the store records are in. In effect, the internal schema is the storage definition structure. फिर आगे मैपिंग्स पे। भाई मैपिंग्स बिल्कुल अलग टॉपिक है। मैपिंग्स का नया टॉपिक आपको समझना पड़ेगा। द कंसेप्चुअल इंटरनल मैपिंग इट डिफाइंस conceptual or internal view of a correspondence, specifies mapping from conceptual report to their store counterpart। एक्सटर्नल conceptual मैपिंग आ गई इसमें, फिर इंटरनल conceptual मैपिंग आ गई, फिर इसमें भी मैपिंग के टाइप आ गए। अब इसमें समझने वाली चीज़ ये है कि a change to the storage structure definition means that the conceptual internal mapping must be changed accordingly so that the conceptual schema may remain invariant, achieving physical data independence। A change to the conceptual definition means that the conceptual external mapping must be changed accordingly so that the external schema may be invariant, achieving logical independence। यानी कि डाटा इंडिपेंडेंस की बात हो रही है। अब लॉजिकल हो रही है उसमें, उसमें फिजिकल हो रही है। एक में फिजिकल हो रही है, एक में लॉजिकल हो रही है, एक में इनवेरिएंट हो रही है। रिमेन इनवेरिएंट तो दोनों में ही हो रही है, लेकिन लॉजिकल और फिजिकल में बहुत अंतर है। डीबीएमएस आ गया हमारा अब। ओके, सॉरी, DBMS आ गया। Database Management is software handles all the access to the database, is responsible for applying the authorization checks and validation procedures। Okay, so that it handles all the access to the database. It is responsible for applying the authorization checks and validation procedures। Conceptually, what happens is a user issues an access request using some particular DML। Okay, now please follow the points that is written on the following document. Please try to read and go through this document very seriously। A user issues an access request some particular DML. The DBMS intercepts the request and accepts it. The DBMS inspects and terms the external schema, the external conceptual mapping, the conceptual schema, the conceptual internal mapping, and the storage structure definition. The DBMS performs the necessary operation on the stored database.
द डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन मतलब ये प्रोसेस हमारा 4 में डिवाइडेड है। आप ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि आपको समझ में आ जाएगा तो आप जो है पार हो जाओगे। Database administrator आ जाइए। DBA is a person or group of people responsible for overall control of the database system, deciding the information content of the database, identifying the entities of interest to the enterprise, and information to be recorded about the entities is defined by writing the conceptual schema using the DDA, deciding the storage structure and access strategies. कोई आपसे and how the data is to be represented by writing the storage structure definition. How the data is to be represented by writing the storage structure definition. How the data is to be represented by writing the storage structure definition. The associated external conceptual schema must also be specified using the DDL. Okay, इसमें DDL का यूज हो रहा है। क्यों यूज हो रहा है? डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए स्टोरेज स्ट्रक्चर। ये स्टोरेज स्ट्रक्चर ही तो है। स्टोरेज स्ट्रक्चर लिखोगे क्या में? कमांड यूज करके तो लिखोगे। वो लिखे हो कैसे? DDL कमांड यूज करके। लिएजिंग विद यूजर आगे लिखेंगे, परेशान ना होइए। Liaising with its users, that is to ensure that the data they require is available and to write necessary external schema and conceptual external mapping. Again using DTL. Defining authorization checks and validation procedure. Authorization checks and validation procedure are section to the conceptual schema and can be specified using the DDL. Defining a strategy for backup and recovery, for example, periodic dumping of the database to a backup tape and procedure for reloading the database for backup. Use of a log file where each log record contains the values of database for database items before and after a change and can be used for recovery purposes. Monitoring performance and responding to changes in requirement, that is changing details of source data and access, thereby organizing the system so as to get the performance that is best for enterprises. DBA tools आगे हमारे यहाँ पर लोडिंग रूटीन से रीऑर्गेनाइजेशन रूटीन, जर्नलाइजिंग रूटीन, लॉग फाइल्स, रिकवरी रूटीन, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस रूटीन। ओके, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल फॉर ऑफ द DBA इज द डाटा डिक्शनरी। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। प्लीज़ आप इस डॉक्यूमेंट को देखते रहिए। प्लीज़ आप इसको समझने की कोशिश करिए। द डाटा स्ट्रक्चर data dictionary is simply a database that contains data about data. That is a description of other objects in the system. Facilities and limitation आ गया वो हमारा। The facilities offered by DBMS vary a great deal depending on the level of sophistication in general. However, a good DBMS should provide the following advantages over a conventional system. Independence of data and program. This is a prime advantage of a database. Both the database and user program can be altered independently of each other, thus saving the time and money which would be required to retain consistency. Data shareability and non-redundance non-redundance of data. The ideal situation is to enable the application to share an integrated database containing all the data needed by the application and thus eliminate as much as possible the need to store the data redundantly. Integrity with many different users sharing various portions of the database. It is impossible for each user to be responsible for the consistency of the values in the database for remaining the relationship of the user database and to all the data items, some of the which may be unknown or even so prohibited for the user to access. Centralized control with central control over database, DBA can ensure that standards are followed in the representation of data. Security having control of the database or the DBA can ensure the access to the database is through proper channel and can define the access rights of any user to any data
items or defined data subset of the database. The security system must prevent corruption of the existing data either accidentally or maliciously. Performance and efficiency in the view of the size of database and of the binding database assessing requirements. Good performance and efficiency are major requirements. Knowing the overall requirement of the organization as opposed to the requirement of the any individual user, the DBA can structure the database system to provide an overall service that is best to the enterprise. अब आगे data independence पे this is the prime advantage of database. Both the database and the user program can be altered independently of each other. In a conventional system, applications are data independent. This means the way in which the data is organized in secondary storage and the way in which the assets are both dictated by the requirement of the application. Moreover, the knowledge of the data organization and access technique is built into the application logic. For example, if a file is stored in index sequential form, then an application must know that the index exists, the file sequence as defined by the index. हमारा index एग्जिस्ट करता है या फाइल सीक्वेंस को देखने के लिए ये सब यूज होता है. The internal structure of the application will be built around this knowledge. If, for example, the file was to be replaced by a hash dress file, major modification would be have to be made to the application. Such an application is data dependent. It is impossible to change the storage structure. However, how the data is physically recorded or accessed strategy, how it is accessed without affecting the application probably drastically. The portion of the application requiring the alteration are those that communicate with the file handling software. The difficulties involved are quite relevant to the problem application was written to solve. It is undesirable to allow application to be data dependent, that different application will be need to different views of the same data. The DBA must have the freedom to change the storage structure or access strategy in response to changing the requirement without having the modifying existing application. Data independence can be defined as the immunity of application to change in storage structure and access strategy. ये याद रख लेना, इंटरव्यू में बोल देना. डाटा इंडिपेंडेंस कोई पूछेगा तो इन्हें बताना शेरों की तरह. The immunity of the application, the immunity of application to change in storage structure and access strategy. The immunity of application to change the application of the immunity of application to change in storage structure and access strategy. अब आ गया रहा डाटा रिडंडेंसी पे. डाटा रिडंडेंसी हमारा होता है नॉन डाटाबेस each application has its own private file. This can be often lead to data redundancy in stored data with resultant waste in storage space. In a database system, the data is integrated. The database may be thought of as a unification of several otherwise distinct data files with any redundancy among those files partially or fully eliminated. Data integration is sometimes regarded as an important characteristic of database. The avoidance of redundancy, the avoidance of redundancy, the avoidance of redundancy should be an aim. However, the bigger one, which this aim should be pursued is open to question. Redundancy is that if a value is copy of another, indirect if the value can be derived from other values. Simplifies retrieval but complicate complicate update. Conversely, integration make iterable, slow and update easier. The data redundancy can lead to inconsistency. Data redundancy can lead to inconsistency in the database unless controlled. The system should be aware of the data replication. The system is responsible for ensuring data updates that are carried out correctly. A DB with uncontrolled redundancy can be in an inconsistent state. It can apply incorrect uncontained information.
A given fact represented by a single entry cannot result in inconsistency. Few systems are capable of propagating updates, that is, most systems do not support control redundancy. अब आ गए हम डाटा इंटीग्रिटी पे. This describes the problem of ensuring that the data in the database is accurate. Inconsistency between the two entries representing the same fact. Give an example of integrity. Integrity constraints can be viewed as a set of assertions to be obeyed when updating a DB to preserve an error-free state. Even if the redundancy, Even if redundancy is eliminated, the DB may still contain incorrect data. Integrity checks, which are important, are checks on the data items and record types. Now, integrity checks on the data items can be divided into four groups. Now, भाई ये लिख लो आप डाटा इंटीग्रिटी. ये पीछे शोर आ रहा है, प्लीज आप इस पे ध्यान मत देना. Integrated checks on data items can be divided into four groups: type checks, redundancy checks, range checks, comparison checks. Okay, now type checks. Ensuring a numeric field is a numeric and not a character. This check should be performed automatically by a DBMS, which is known as type checks. Redundancy checks, direct or indirect. See the data redundancy. This check is not automatic in or most cases. Now, range checks. Example to ensure data item value fall within a specified range of values, such as checking of dates so that the age is greater than 0 and age is less than 100. Now comparison check. In this check, function of a set of data item value is compared against the function of another set of data item value. Example, the maximum salary for a given set of employee must be less than the minimum salary for the set of employee on a given on a given the maximum salary for a given set of employee must be less than the minimum salary for the set of employee on a higher salary scale. A record type may have constraints on the type of number of occurrences or on the insertions or and deletions of record. For example, in patient database, there may be a limit on the number of X-ray results for each patient, or the details patient visit to hospital must be kept for minimum 5 years before it can be treated. ये समझ में आ गया होगा. जरा एक बार देख लीजिए दोबारा से. Now, centralized control of the database help maintain integrity. It permits the DBA to define validation procedures to be carried out whenever any update operation is attempted. Update covers modification, creation and deletion. Integrity is important in a database system. An application run without validation procedures can produce an erroneous data which can affect other applications using the data. ये समझ में आ गया होगा. एप्लीकेशन अगर वैलिडेशन के साथ नहीं चलेगी तो वो erroneous data प्रोड्यूस करेगा, which can be controlled by integrity in a data system. सबसे पहले आपका यूनिट 1.1 ऐसे समाप्त होता है. अब यूनिट 1.2 पर आएंगे हम अगली वीडियो में. तब तक के लिए आप देखते रहिए आपके भाई को दिव्यांश दयाल को. थैंक यू.